मेरे पास बहुत सारे कपड़े ऐसे। A very good evening to everyone. It's 2 minutes until we start. Good evening. Good evening, Bhabhi. Good Good evening. evening, Dee. How are you? Good, fine. So, how is everyone's forgiveness practices going on? चल रहा है भाभी. I don't know how many of us are regular, but I hope ना कि ये सब हम लोग सुनते भी हैं, करते भी हैं, तो mindset change हो जाता है. I think. हाँ, इफेक्ट तो आता है. इफेक्ट आता है, दिखता भी है और चेंजेस है. हाँ, जरूरत पड़े तब challenges आए एटलीस्ट तब करें. Of course, if we do every day, उसका असर बहुत मैजिकल एंड बहुत ट्रेमेंडस होता है. बट यस, इवन लिसनिंग टू दिस और माइंड में आने से भी एटलीस्ट वी नो हम कहाँ गलतियां करते हैं. आगे awareness increases. Yes. That time, next time when we are mistake, maybe हम लोग अपने आप को hold कर लेंगे. आपकी आवाज क्लियर नहीं है दी. Your voice is breaking, शालिनी. तो तेरा वीडियो भी फ्रीज हो गया. Some issue with your net, Shalini. We are unable to hear you clearly. Your video also had frozen. I'll just change my net connection. Just give me a minute. Okay. So everyone, we are. So we are ready to start as soon as Shalini is just getting back online. अभी आपका फॉरगिवनेस यूट्यूब में जो था रजन सर के साथ वो डिलीट हो गया क्यों? नहीं, वो आ जाएगा वापस. There's some issue with it. वो आ जाएगा. They're trying to. हाँ. बोल के वो temporary. आज सुबह EFT किया था, अच्छा लगा. हाँ, वो अपने भी करेंगे सेशन में. मंडे सेशंस we will also come to it. और बहुत अच्छा करा रही है वो. हाँ, आपसे कनेक्टिविटी जुड़ गया ना. Shalini, you're okay to start now?
Is my voice audible now? A little breaking. It's still breaking? Much better than before. Let's get on with the prayer, then maybe we can make out. Yes. So we all ready? Let us start today's session with a prayer. To the Supreme God, to the Great, Great One, we humbly invoke for your divine blessings, for your divine strength, for your divine knowledge, for your divine presence during the session that we have come for, to learn forgiveness, to practice forgiveness. Please give us the strength. Please give us that kind of inclination to hold, to take the life in our hands, to move forward in our life, to leave what is left behind. Thank you for being with us at all point of time, holding our hands, guiding us. Thank you for your presence. Thank you for your love. Thank you for your knowledge. In full faith, thank you. Thank you. Thank you. I hope my voice is audible now. Yeah, it's clear. It's clear. Good evening, everybody. Good evening. We are into forgiveness session, and today is the 4th day into the session. All this while we have been talking about what forgiveness is and talking its implication in different areas of our life. As we had understood the forgiveness prayer in depth last time, today our topic is for money. But before we go to the topic of money, let's just do a very fast recap of what forgiveness is. Giving or asking forgiveness, gives us a freedom from our past suffering. It is the willingness, it is our conscious decision on our part to move ahead in life, to live a very happy life, and to take the reins of our life in our own hands. It is like transforming anger, hurt into healing and peace. It is like, it is as though, we are taking that control and saying that we don't want this hurt. We don't want the anger or fear in our lives. We want to change it. And sometimes we always think, now, why should we forgive this person who is the wrongdoer? Why? Usko kyun jaane dein? Why should we let it go? We are not trying to let that person off the hook. That person who has wronged us, we are not trying to let them go. What we are trying to do is let go of the pain, the hurt, that thing which is pulling us down, which is draining our energies. We are trying to take it out of our hands. And we certainly are not giving the other person the charge of, still mistreating us, be it a life partner or be it our boss, be it our friend, or कोई भी ऐसा इंसान जो हमारे साथ गलत कर रहा है. We are not giving him the right to keep repeating it. By forgiveness, we don't mean that, if we are forgiven a person who has stolen something from us, doesn't mean that we will not go to the police and file a report or file an FIR, or we are not going to just let him go. It doesn't mean that we will not take the action. But what does it mean? That the pain and hurt जो हम लोग अपने अंदर hold करके रखते हैं, that grudge that we are holding inside ourselves, that burning coal that we are holding inside us, we're just letting it go. We are just removing that pain and hurt from us. And what happens when we don't forgive? Why do we hold grudge? We hold grudge as though we can change our past. This is what we have been doing, thinking again and again about the incident and feeling the pain, feeling the hurt, as though our past is going to change. It's not going to change. Forgiveness is the way to let this kind of that
burden what we are carrying on our shoulders na, usko hatane ka, this is a way of removing it from your shoulders to feel lighter. And when we come to today's topic, economically, what we do, what is the need for money in our life? I think we all know the importance of money in our life. Though spiritually, if we say, we'll say, na, money is not that important. Money cannot buy you happiness. But there is a quote, na, if you want to cry, it is better to cry in a Mercedes than on the footpath. Do we all agree that, if we are crying, it is better to be in the Mercedes rather than be crying on the footpath? So money is that important in our life for our daily needs, for the education, for our well-being, for our health, for our proper living. That saying in Hindi, na, for kapda, for makan, khana, pina, sab kuch boils down to money. Can I request everybody to mute themselves, please? Thank you. So what money is like, at the end of the day, money is very important in our life. And even if we want to help others, we have to have money power to help others as well. So what is money? Money is at the end of the day, a kind of energy. We all agree that it is a kind of energy. And we have all understood that our thoughts, our vibrations are again floating into the universe in a form of energy. So what we think about money, the way we look at money, the way we feel about money is what we emit into the universe. And what goes into the universe, at the same frequency, we are given back, right? The same frequency, what we emit into the universe gives us back. So what we feel about money, जो हम जैसा feel करते हैं पैसों के बारे में, जैसा हमारा विचार है पैसों के बारे में, this is what we are given back from the universe. Suppose we are holding our mistakes, अगर हम पैसों के मामले में बहुत गलतियां कर चुके हैं, and those mistakes के कारण we have a lot of guilt in ourselves, बहुत शर्मिंदगी फील होती है, गुस्सा आता है, we are regretting of the decisions that we made in the money matters. All these emotions of guilt, of fear, anger, पश्चाताप जो हम feel करते हैं ना, all that when goes into the universe is holding back money coming into our lives. Are we getting it? This is the when we are pushing this kind of vibration into the universe, जो money का flow हमारी तरफ आ रहा होता है, that stops. That stops. And this depends upon, again, our belief system for money, what we have thought about money, what we have heard about money. लोगों से हमने पैसों के बारे में बहुत कुछ सुना रहता है. जब से हम बचपन से अब तक हम पैसों के लिए बहुत कुछ, पैसे कमाना डिफिकल्ट है, it is very, पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं. Do we all relate to these kinds of things, what we have heard from our childhood? And this comes into our subconscious mind and becomes our thought process as well. And what all these belief system ये क्या करता है हमारी life में? It is pulling us down. It is emitting those vibrations into the universe that money is difficult to earn. So what does the universe say? So be it. So it is difficult to earn. When we say money is possible, money comes to me like easily. For whatever expense I need money is always there. Then what does the universe do? So be it. So whatever we think, universe gives us back. And till today, whatever mistakes we have made in the money का field में, अगर हमने उसके लिए बहुत सारी गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, बहुत fear रहा है हमारे मन में, we have regretted some of our decisions that we have taken. Suppose हमने कोई share market में बहुत ही गलत decisions ले लिए, या फिर business में गलत deals कर लिए, तो we hold on to those guilt. And forgiveness is such a tool. It's a very, very potent tool. It's a very important and effective tool
to let go of all these emotions. ये सारे जो कचरे की तरह हमारे अंदर जमा हो गया है ना, उसको हटाने के लिए forgiveness is so very powerful. And if it is very important कि हम अपने आप को इन पैसों की दुनिया में जो हमने मिस्टेक्स करी हैं आज तक, उनको हटाएं ताकि हमारे पास पैसे आने शुरू हुए. Prosperity comes to us. The beliefs what we have made for money, उनको हम हटाएं and put, जो हम बोलते हैं ना, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालें ताकि पैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट हों. And when we start forgiving ourselves and others and the situation for the money troubles, जो आज की situation है हमारी पैसों के दुनिया में, जहां हमको फील होता है कि we don't have enough, या जहां हमने पैसे डाले वहां डूबते ही डूबते हैं. अगर मैंने ये शेयर लिया, कल तक बहुत ज्यादा हाई जा रहा था, जैसे ही मैंने इस शेयर में पैसा डाला, this share is come down. जहां मैं, एक तो होता है ना, जहां मैं खोदता हूं वहां सोना ही सोना मिलता है, और हमारा बिलीव क्या है, जहां मैं हाथ डालता हूं वहां नुकसान ही नुकसान होता है. सो these are small छोटी छोटी चीजें शायद जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं, और हम अपने आप में दिमाग में ये लगातार बोलते रहते हैं. कोई भी आपसे पूछता है आपका बिजनेस कैसा चलता है, डू वी नो व्हाट द आंसर वी गेट? मेरा बिजनेस तो चाहे वो करोड़ों में खेलता हो, करोड़ों की कमाई हो, बट व्हाट द पर्सन सेज, माय बिजनेस इज नॉट दैट ग्रेट. आजकल तो धंधे में कुछ फायदा ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट. इमेजिन व्हाट वी आर डूइंग. Are we giving the wrong vibrations to the business or to the money? क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस से तो पैसे जनरेट होते हैं ना. तो व्हाट आर वी डूइंग, हम पैसों को दूर भेज रहे हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं. व्हेन वी आर सेइंग कि हमारे पास तो पैसे आ ही नहीं रहे, तो हाउ विल द मनी कम टू अस? So it's like, and who should do this forgiveness prayer for money? क्या सिर्फ पुअर ही को करना चाहिए? क्या सिर्फ उनको ही करना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है? It is not like that. We all, whether we have money or not money, at some point of time, हमने पैसों के लिए कभी ना कभी we would have said wrong things. We would have had wrong thoughts. We would have had some sinful thoughts in our mind. And that for पैसे हैं नहीं है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी का जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं रोक रहा होता है. So it is so important for each one of us to forgive others, forgive ourselves, forgive money. These are the three areas that we will look into in detail today. कि हम कैसे each area में समझ सके कि हमने अपनी लाइफ में, when I am talking about today, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आप अपनी लाइफ में जाके देखो what you are doing in terms of money. एक होता है ना गिल्ट, जो एक इमोशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है. दैट गिल्ट वाला इमोशन कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली टू अलाइन आवरसेल्व्स फॉर डूइंग बेटर. हम अपने आप को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं. और एक गिल्ट का इमोशन होता है जब हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो हमारी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है. सो एंड व्हेन वी यूज दैट एनर्जी इन द नेगेटिव वे, हमारा सारा दिमाग तो वो गिल्ट में चला जाता है. वेयर इज दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन दैट वी आर क्रिएटिंग? वेयर इज दैट राइट इमोशंस दैट वी आर थ्रोइंग इनटू द यूनिवर्स? सो व्हेन वी नीड फाइनेंशियल हैप्पीनेस, व्हेन वी नीड फाइनेंशियल अबंडेंस, व्हेन वी नीड लॉट्स ऑफ एंड बहुत सारा पैसे चाहना इज नॉट रॉन्ग. एक ये भी बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना कि ज्यादा पैसे चाहना इज सेल्फिशनेस. No, it is not selfishness. If you have more than enough money with you, it is always an opportunity for you to help others. आपके पास पैसे हैं तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे. Only then can somebody who comes to you for help, you have that required amount. तो ज्यादा पैसे होना is not selfishness. ज्यादा पैसे होना is not sinful. And पैसे का एक दिमाग में थॉट है ना, पैसे is evil. कभी सुना है आपने? सारे फसाद का जड़ पैसा है. Have you heard somebody saying that? कि सारे प्रॉब्लम्स का जड़ is money.
अगर वो खराब हो गया इंसान, तो उसके पास इतना पैसा था कि उसका दिमाग खराब हो गया. दिस इज यूजुअली व्हाट वी हियर. सो इट इज लाइक आप अपनी अपनी लाइफ में देखो कि आपके थॉट फॉर्म्स कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके मनी की लाइफ के लिए क्या आपके पैटर्न्स हैं. और आपका जो सपोज एक मनी का एक चलता आ रहा है ना, कि आपके पास अबंडेंस है, या फिर आप स्लाइड डाउन कर रहे हो, या फिर आप एक स्टैग्नेंट हो गए हो, आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है. लुक एट द पैटर्न्स इन योर लाइफ. सो इफ वी वेयर टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कि हाउ कैन वी फॉरगिव अदर्स, ये अदर्स की कैटेगरी में कौन कौन आ सकते हैं जिनको हमको फॉरगिवनेस देना पड़ेगा मनी के सेक्शन में. सो इट्स लाइक व्हेन वी सपोज आप एक यू आर डूइंग अ जॉब एंड यू आर एलिजिबल फॉर एन इंक्रीमेंट, लेकिन आपका बॉस आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रहा. सो आप उसके लिए रिजेंटमेंट होल्ड करते हो. आप बॉस के लिए रिजेंटमेंट होल्ड करते हो डजंट मीन आप बॉस के लिए, वो पैसों के लिए कर रहे हो जो आपको नहीं मिले, राइट. सो दिस कैन बी वन एरिया. वन अनदर एरिया इज आप अपने से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हो, आपकी जरूरतें आप मीट नहीं कर पा रहे हो, यू डोंट हैव इनफ मनी फॉर योर ओन नीड्स, एंड यू आर सीइंग योर फ्रेंड्स वेरी सक्सेसफुल, spending money like crazy, you feel jealous. So this is one category when we have to forgive the person. It is not that person's mistake that they have so much of money, right? वो उसकी गलती नहीं है. And then there may be a category of people जहां जिसको हमने कभी पैसे दिए थे and वो रिटर्न नहीं कर रहा है, वो हमारा पैसा ले चुका है, he is not returning back our money. उसके पास पैसे हैं या नहीं है, whatever may be the reason, but the person is not giving back us our money. We have to forgive our partner or our spouse, our family members who are spending irresponsibly. कभी कभी हमें लगता है ना दूसरों को देखकर, क्यों फिजूल में पैसे खर्च कर रहे हो. हम तो इतना सोचते रहते हैं, एक चीज खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं whether we should buy this. And look at my husband, वो तो सोचते भी नहीं है, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में लेके आते हैं. How irresponsible. And these are small things we keep on doing on a daily basis. हम अपने बच्चों को तुरंत बोलते हैं, ये 100 रुपए का, do you think it is worth? ये 100 रुपए का चीज लग भी रहा है. How irresponsible. तुम लोग को पैसे की कोई वैल्यू नहीं है. Do we have a raised hand कि कौन कौन ये चीज फील करता है at every given point of time in life? We feel कि हमसे हम ज्यादा responsible हैं. And then when we buy so many materialistic things, when we buy clothes, jewelry, maybe gadgets, या फिर घर पे एक घर के बाद दूसरा घर, या गाड़ियां, या whatever luxuries जो कि हम मतलब सिर्फ बाय करते हैं, हम उसका इस्तेमाल उस कंपैरिजन में करते ही नहीं है. हमारे अलमीरा में, हमारे कबर्ड्स पे इतने कपड़े होंगे जिनको हमने हाथ भी नहीं लगाए होंगे. We just have bought them. There may be hundreds of books which we have bought but never read. हमने शायद कितनी ऑनलाइन कोर्सेज को हमने किया होगा अप्लाई, but we have not used them. So it is like we are just, एक होर्डिंग होता है ना, होर्डिंग वाला हमारा वो एक नेचर हो जाता है, इकट्ठा करो, but we don't use. So we need to forgive those people whom we think are hoarding things and just wasting money. And एक बार एज अ हाउसवाइफ बहुत लोगों ने ये सुना होगा, तुम तो पैसे कमाती नहीं हो, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं. How can you spend so much in your household account? Why don't you cut down your household account? It is so difficult to earn money. कभी ना कभी किसी ना किसी ने बोला होगा कि पैसे कमा कर देखो, फिर पता चलेगा कि कैसे खर्च करना है. Do we all relate to this कि हमने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि कैसा फील होता है when somebody comes and tells you कि पैसे कमा के देखो, तब खर्च करना सीखना. So these are small things. And as a child, बचपन से
टीचर्स से, पेरेंट्स से, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, फ्रॉम आवर फैमिलीज, हम लोग पैसों के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम में बनता रहता है, और हम उसके बेसिस पे ही एक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे ही मनी डिसीजंस लेते हैं, उसके बेसिस पे ही खर्च करते हैं या फिजूल खर्च करते हैं, वॉट एवर मे बी द थिंग. Either we are very spendthrift or we are very miser. All these belief systems we have acquired it at some point of time in our life. So we need to forgive all those people who have influenced us for money. आप अपनी अपनी लाइफ में आप देखो, आपको कौन आपको इन्फ्लुएंस किया है, या कौन है ऐसा जो आपके पैसे मारकर भाग गया है, या हु इज देयर इन योर लाइफ हु इज वेस्टिंग मनी एंड यू फील द पर्सन इज वेस्टिंग मनी. एज पर द अदर पर्सन दैट मे बी अ वेरी सेंसिबल बाय, बट एज पर यू, आपने मन में पता नहीं 50 बार उसको गाली दे दी होगी. व्हाई हैव यू बॉट दिस? व्हाट इज द सेंस ऑफ बाइंग दिस? You may not have verbally said anything, but in your thoughts, you may have criticized the person many a times. So next, let's come to when we have to forgive ourselves. I think we are the person we will be the, I think we'll judge ourselves very harshly when it comes to money. Do we prioritize ourselves in spending money when it comes to our children, our family, our other needs? हमारा needs सबसे नीचे रहता है. We don't feel we deserve money. कितनों को लगता है कि we don't deserve the money that we spend. We spend more than what we deserve. बहुत बार ऐसा लगता है. So I mean, next is, you know, when we are spending more than what we have earned. कमाई बोलते हैं ना, कमाई 54 and आमदनी 98 and खर्चा रुपया. We are earning 50 paisa and we are spending 1 rupee. And other times is, you know, when we have filed bankruptcy, हमारे पास पैसे हैं या फिर हमारे पास पैसे नहीं भी और हमने bankruptcy फाइल करी है, तो हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों का घर, हमारे मतलब how many people who have loaned us has gone, they have also ruined themselves. उनका भी घर खराब हो गया हमारे पैसों की वजह से. We are the cause for their problems. And there are so many times we have made wrong decisions, चाहे हमें वो shares में डालने हो, mutual funds के decisions हो, या SIP के decisions हो, या फिर या jewelry में डालने के decisions हो, housing के decisions हो, कोई loan लेना हो किसी से, शायद हमने ज्यादा rate पे, interest rate पे loan ले लिया हो, कोई business decisions हो जो हमने गलत कर लिए हो. There are so many times we tell ourselves that we are wrong. We are not worth the money. पैसों का काम हम अच्छे से नहीं कर पा रहे. Don't we all have this kind of a things at some point of time in life? And sometimes we feel ना कि जितने पैसे हमारे पास है वो हमारे लिए enough है, हमें इससे ज्यादा चाहिए नहीं. ये इससे ज्यादा चाहना is like, you know, you are hoarding. पैसे की धुन है आपको, आप पैसा पैसा करते रहते हो सब टाइम पे. इतना ही मेरे लिए इनफ है. तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? सो बी इट, आपको इतना ही मिलेगा. जबकि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड खजाना है यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए. इट इज जस्ट दैट यू नीड टू वाइडन अप, यू नीड टू वांट. आपको वो चाहना आना पड़ेगा, आपको वो राइट सिग्नल्स यूनिवर्स को देना पड़ेगा. Now, what in this, you know, we can always have, we can say we are worth the money. I forgive myself for blaming that I don't deserve money. Every day is a new day and money comes to me like I pull money like a magnet. I love money and money loves me. These are small, chota positive statements that we can tell ourselves every day. I deserve money and money deserves me. Money is flowing to me like a gigantic waterfall. ये हम हर एक दिन अपने आप को बोल सकते हैं. एंड जब हम ये सब थॉट फॉर्म्स लाते हैं ना कि हम डिजर्व नहीं करते हैं, पैसा हमारे पास टिकता नहीं है, पैसा आने से पहले ही निकल जाता है. एंड यू नो व्हेन वी से कि वी डोंट डिजर्व मनी, वी डोंट वांट गिफ्ट्स. जब हम गिफ्ट्स को डिनाई करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? इन अ वे वी आर डिनाइंग
मनी, क्योंकि वो कोई जो भी आपको गिफ्ट्स दिया है कहीं ना कहीं पैसे खर्च करके उन्होंने वो गिफ्ट्स खरीदा है. सो एट द एंड ऑफ द डे हम हर चीज मनी को, जो भी इमोशंस हम कोई मटेरियलिस्टिक थिंग को दिखा रहे हैं वो मनी की तरफ जा रहा है. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज सेइंग दैट आई यूज मनी एट द रॉन्ग प्लेस, मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, आई रियली डोंट नो वेदर माई इन्वेस्टमेंट्स आर राइट और रॉन्ग. वी कैन ऑलवेज टेल आवरसेल्व्स I use money at the right place and in moderation. मैं सही रूप में सही जगह पैसों का इस्तेमाल करता हूँ. These are small affirmations that we can take. And अगर हम अब थर्ड एरिया में चलते हैं, हमने दूसरों को फॉरगिव किया पैसों के लिए, अपने आप को फॉरगिव किया पैसों के लिए. एंड द थर्ड एरिया दैट वी विल लुक इनटू कि पैसे इटसेल्फ को, जो पैसे एक एनर्जी फॉर्म है ना, जो एनर्जी है उसको, उससे हम कैसे फॉरगिवनेस मांगे. हम जब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है मनी इज इविल, जो हमने अभी बात करी कि पैसे ही हर बीमारी की जड़ है, ऑल दिस बिलीफ सिस्टम को हमें अपने अंदर से निकाल फेंकना है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू टू स्टार्ट लविंग मनी, टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मनी, टू स्टार्ट वांटिंग मनी इन आवर लाइफ. एंड abundance of money चाहिए, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए that we need abundance of money. And when we are jealous of other people, prosperous people, it is the money that we are jealous of. अब जो यूनिवर्स में आप जेलसी की भावना भेजोगे, यूनिवर्स में लैक ऑफ मनी की भावना भेजोगे, then that is what is going to come back to us. So that is, we will get more lack of money. We need to ask forgiveness from money for not respecting it, for being ungrateful for today's money. आज आपके पास जितना है, जैसा है, जिस मात्रा में है, how much ever money we have today, we need to be really, really grateful for what we have. Only then, when we are grateful for what we have today, we will be given much more and in abundance. बोलते हैं ना, भर भर के हमारे पास पैसे वापस आएंगे when we are grateful for what we are having today. And the worst thing is having emotions of fear, anger, lack of money, that what will happen to us in the future, that worry, that anxiety, how will our future be. ये चीज की जो एंजाइटी है, इसको निकालकर ये फेथ एंड बिलीव रखना कि देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी इन द यूनिवर्स, एंड पैसे हमारे पास जब जब हमें चाहिए भरपूर मात्रा में हमारे पास आएंगे. यूनिवर्स हैज अबंडेंस ऑफ मनी एंड मनी लव्स मी एंड इट विल कम बैक टू मी. इफ फेथ पे if we start living now, we will never have problems with money. So today we will do the forgiveness prayer in 3 areas. For forgiveness for monies when it comes to others, when it comes to ourselves, and money for itself. So I'll hand over to Sarita Bhabi for the forgiveness prayer. Yes, thank you. Thank you, Shalini. That was beautifully explained, and I think a lot of clarity has come to all of us regarding कि किस्मत को नहीं blame कर सकते, money से कहीं पे if we are having any challenges with money, then we ourselves can do something about it. हमें खुद ही उसके बारे में कुछ करना है. And forgiveness is one of the most potent ways कि जिस तरीके से हम अपने life में प्रचुरता ला सकते हैं, right? So she has explained it very well कि कहाँ भी अब we need to forgive others, we need to forgive ourselves, and पैसे को भी आपने कभी किया है? सोच के देखिए कि आपके सामने पैसा रखा है, उसको forgiveness करेंगे, उससे forgiveness मांगेंगे कि please forgive me. So आज तक हमने जो भी forgiveness किया है, we have done it with people, with other people, खुद के साथ, तो वो हम करेंगे. एंड लास्ट में वी विल ऑल्सो, जो हम पहले हम लोग बोलते हैं ना, माफ करो तो माफी मिलेगी, तो पहले हम दूसरे लोगों को माफ कर रहे हैं, खुद को माफ कर रहे हैं, फिर पैसे से माफी मांग रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो टुडे दे आर अ लिटिल लॉन्ग प्रेयर्स बिकॉज सबकी एरियाज अलग है. किसके लाइफ में
पैसे के लिए अलग अलग चीजों की गलतियां हुई भी है. तो each prayer we are going to be a little elaborate so we can cover different areas. So एक बार इंग्लिश में करेंगे एंड एक बार हिंदी में करेंगे. ओके, सो लेट्स ऑल डू इट सीरियसली. पहले सीधा बैठते हैं. जस्ट क्लोज योर आईज. कोई ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिससे आपको कोई पैसे को लेके कोई नफरत हो. Some irritation. He doesn't give me money to spend, or he always talks negative about money. She always talks negative about money. Oh yeah, this person wastes money, has no regard for money. ऐसे एक इंसान को आपके सामने रखो. आप चाहो तो 2-3 इंसान को रख सकते हैं इसमें, it doesn't matter. So just imagine कि वो आपके सामने बैठे हैं. Smile at them. वो भी आपको देख के वापस मुस्कुरा रहे हैं. Atma Namaste. I salute the divinity in you. We are all children of God. We all are one. I forgive you for not returning my money. I forgive you for not giving me the money I deserved for my work. I forgive you for being irresponsible with money, for wasting money, spending it needlessly. I forgive you for all your harsh words regarding money, for all the words that you spoke which created negative beliefs in me about money. I forgive you for all the mistakes you have made regarding money, for all the negativity you have had about money, which has affected me. I understand that you did what you thought was right. I understand that you are evolving and you made mistakes in your life. Today, I choose to forgive you. I release you. Please go in peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Let all the irritation that you have for this person. Maybe when Shalini explained the matter, you realized that that person caused me pain regarding money. And you felt irritated. Why did he do that? Let all that irritation dissolve. Let it all go away. Let the person go in peace. You are at peace. No one can stop money from coming to you, not what other people do or say. Because I forgive them all. Now we shall do forgiveness for ourselves. What we have thought about money. जो भी हमने कोई नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अपने विचारों से, अपने कर्म से कुछ क्रिएट किए हैं. इमेजिन योरसेल्फ कि आप खुद अपने सामने बैठे हो, खुद को देख के मुस्कुराएं. Just smile. Atma Namaste. I realize that I have not been kind towards money, and today I forgive myself for it. I have been spending on unnecessary things which I never use. I forgive myself for it. I forgive myself for spending money beyond expectations, beyond earnings, for having made bad investments. I forgive myself for being jealous of other people's prosperity, for criticizing those people who very lovingly express their love for money, for thinking they have
been greedy for money. I forgive myself for speaking negatively about money, for creating fears about having less money. I forgive myself for thinking I do not deserve money, for not prioritizing my needs. I forgive myself for saying no to gifts, for thinking I have enough, I don't need more, and thus creating a block for money to come to me. I forgive myself. I am a child of God. I love and accept myself as I am. I am a money magnet. Money is flowing to me now. It comes to me effortlessly and easily. I deserve money and money deserves me. Every day, in every way, my wealth is increasing. I have enough money to meet my needs, wants, and to share with others. Abundance flows to me wherever I go. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Just imagine that you're having all positive thoughts about money. Bless yourself with a lot of abundance. And bless others. Everyone in the world is having enough money, is in having all that they want. Bless everyone. The third forgiveness, just imagine a lot of prosperity. आपको जिस तरह से prosperity दिखती है ना, either bundles of notes, lot of jewelry, a lot of abundance, a lot of stocks, जो भी आपको दिखती है, just imagine that before you. उसको देख के तो शायद स्माइल ऐसे ही आ गई होगी ना. You all are just smiling looking at that. Dear abundance of money, I have made a lot of mistakes about you. I have not given you the respect you deserve. I have not thanked you for being there in my life, in whatever amount. I have thought negatively about you, that your excess presence will ruin my values. I have been jealous of you when other people had more of you. You have been waiting to come to me. You have been ready to come to me. Yet I have feared that I lack you. I have blocked you from coming to me. I have not openly expressed my love for you because I had negative thoughts about you. Dear money, dear abundance, please forgive me for thinking wrongly about you. Thank you for your forgiveness. I am today creating an abundance mindset. I openly receive your flow into my life now. I love you, and I know you love me back. I am totally open and receptive to the abundance coming to me. Thank you, God, and thank you, my guardian angels, for forgiving me and removing all negative doubts, fears, and worry about money and bringing prosperity into my life. Thank you, dear money, for being abundant in my life, for filling my life with joy and happiness. Om Shanti, 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 Om. Just imagine living an abundant life, that you are living very abundant life. आपके पास सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब है, जो जरूरतें भी पूरी हो रही है, आपकी
सपने भी आपके पूरे हो रहे हैं, आप सबके साथ बांट भी रहे हो. जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज दैट लाइफ. Just dance, just feel so happy for it. This visualization will attract more abundance. This happiness, ये खुशी जो आपको फील हो रही है, ये gratitude for this money, बहुत gratitude feel करें. That wow, I have so much. Thank you God. Thank you universe. This one feeling will attract a lot of abundance. अब एक बार हिंदी में करते हैं. पहले उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने आपके मन में पैसे के संबंध में नकारात्मक विचार आपके मन में, उनके कारण आपके मन में आते हैं. तो ऐसे इंसान को आपके सामने इमेजिन करें, वो आपके सामने बैठे हैं और मुस्कुराएं. आत्मा नमस्ते. मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ. हम सब भगवान की संतान हैं. हम सब एक हैं. मेरे पैसे वापस न करने के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ. मुझे वह पैसा नहीं देने के लिए जिस पे मेरा हक था, मैं आपको माफ करती हूँ. पैसे के साथ गैर जिम्मेदार होने के लिए, पैसा बर्बाद करने के लिए मैं आपको माफ करती हूँ. पैसे के संबंध में आपके सभी कठोर शब्दों के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ. पैसे के बारे में आपने मुझ में जो नकारात्मक धारणाएं पैदा की है, उसके लिए क्षमा करती हूँ. मैं समझती हूँ कि आपने वही किया जो आपको उस समय सही लगा. मैं समझती हूँ कि हम सब विकसित हो रहे हैं और हम सबसे गलतियां होती है. आज मैं आपको माफ करने का चुनाव करती हूँ. मैं आपको रिहा करती हूँ. आप शांति में प्रवेश करें. ओम शांति शांति शांति. ओम. उस इंसान को जाने दे. जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में है, उस सबको जाने दे. Just let them go. Be at peace. वो भी शांति में है, आप भी शांति में हो. अब आप खुद को माफ करेंगे. जो भी आपके मन में विचार आए हैं पैसों के लिए, जो भी नेगेटिव विचार आए हैं जो ब्लॉक कर रहे हैं अबंडेंस को आपके तरफ आने से, उसके लिए अपने आप को अपने सामने बैठा महसूस करें और मुस्कुराएं. हेलो, आत्मा नमस्ते. मुझे एहसास हुआ कि मैं पैसे के प्रति दयालु नहीं रही हूं और मैं आज इसके लिए खुद को माफ करती हूँ. मैं अनावश्यक चीजों पे खर्च करती हूँ जिनका मैं उपयोग भी नहीं करती हूँ. इसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ. उम्मीद और कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ. खराब निवेश करने के लिए, अन्य लोगों की समृद्धि से ईर्ष्या करने के लिए, उन लोगों की आलोचना करने के लिए जो पैसे को बहुत खुले दिल से प्यार करते हैं, उन सब के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ. पैसे के बारे में नकारात्मक शब्द बोलने के लिए, पैसे के लिए खुद में भय पैदा करने के लिए कि मेरे पास पैसे की कमी है, मैं खुद को ये सोचने के लिए क्षमा करती हूँ कि मैं पैसे के लायक नहीं हूँ. अपनी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देने के लिए क्षमा करती हूँ. मैं तो भगवान की संतान हूँ. मैं खुद को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ. मैं तो पैसे का चुंबक हूँ. पैसा अब मेरे पास बह के आ रहा है. यह मेरे पास बहुत आसानी से आता है.
मैं पैसे के लायक हूं और पैसा मेरे लायक है। हर दिन हर तरह से मेरी दौलत बढ़ रही है। मेरे पास अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए और दूसरों के साथ बांटने के लिए पर्याप्त पैसा है। मैं जहां भी जाती हूँ प्रचुरता मेरे पास प्रवाहित होती है। ओम शांति शांति शांति। ओम। खुद के पास बहुत अबंडेंस आ रही है। आपके सारे नेगेटिव विचार सब गल के सब गए, ऑलरेडी गॉन। अब तो आपको पैसे के लिए सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है, और आप सबको भी ब्लेस कर रहे हैं कि सबके पास बहुत पैसा हो। अब आप पैसे को इमेजिन करें, धन को इमेजिन करें कि आपके सामने बहुत धन पड़ा है, उससे माफी मांगेंगे। प्रिय धन की प्रचुरता, मैंने आपके बारे में बहुत सारी गलतियां की है। मैंने आपको वह सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार हैं। मैंने अपने जीवन में आपके रहने के लिए जो भी मात्रा में आप मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैंने आपके बारे में नकारात्मक सोचा है। आपकी अधिक उपस्थिति मेरे संस्कारों को बर्बाद कर देगी, ऐसा सोचा है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे आपसे जलन हुई है जब दूसरे लोगों के पास आप ज्यादा थे। आप मेरे पास आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी मुझे डर रहा कि आपकी मेरे पास कमी है। मैंने खुद अपने आपको आने से रोका है मेरे पास। मैंने आपके लिए मेरे प्यार को खुलकर इजहार करने से रोका है, क्योंकि मैं आपके लिए नकारात्मक विचार रखती थी। आप मुझे माफ करें। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। मैं अब एक प्रचुरता मानसिकता बना रही हूं। मैं अब अपने जीवन में आपका प्रवाह प्राप्त कर रही हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे कई गुना प्यार करते हैं। मेरे पास आने वाली प्रचुरता के लिए मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए मैं ईश्वर और मेरे गार्जियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ और सभी नकारात्मक शंकाओं, भय और धन की चिंता को दूर करने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में समृद्धि लाने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रिय धन की प्रचुरता, मेरे जीवन में बहुत अधिक मात्रा में होने के लिए और मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। जस्ट इमेजिन करें कि आपके तरफ चारों तरफ बस प्रचुरता ही प्रचुरता है। जो आपको चाहिए आप सब आपके पास है। आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। आप बहुत खुश हो। आपकी फैमिली सब, एक एक इंसान बहुत खुश है। सब के पास अपनी जरूरतों की सारी चीजें सब बहुत है। सब बहुत खुश है। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, शुक्राने से भरे हुए हैं। उनमें कोई प्राइड, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। हे ईश्वर आपने इतना दिया, हे ब्रह्मांड आपने इतना दिया। थैंक यू सो मच।
Thank you. Thank you. Thank you. So, how was the prayer, everyone? Did you all? थैंक यू भाभी, बहुत 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 अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं पैसे के लिए इतना। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think we can all practice. Thank you this so in a- much, ma'am. Thank you. Is Thank there you. anything Thank you, that- Olivia. Thank you so much. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you. Thank you. Do we have any questions, any Thank you so doubts, much. anything that you have not understood? Anything Yes. regarding कि क्यों करना है तो ऐसे करना है. Any doubts? Anything? हाँ, सरिता Ma'am? जी, मैं रश्मि वर्मा फ्रॉम कलकत्ता। Yes, Yes. please. मैं ये जानना चाह रही थी, इसमें बहुत से सेंटेंसेस ऐसे आए हैं जो मेरी फीलिंग्स में नहीं आए हैं, जो नेगेटिव हैं, वो मैं नहीं सोचा, तो क्या उनको भी मुझे बोलना चाहिए? Not necessarily. आपको जो अपने लिए रिलेट कर पाए, जो आप अपने लिए लगता है कि ऐसा आपने किया है या ऐसा आप सोचते हैं, तभी आप उसका यूज कीजिए। ये बहुत यूनिवर्सल प्रेयर हम करते हैं, इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप बना सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ये सबको थोड़ा अवेयरनेस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि मेरे क्या विचार है, मेरे पैसे के बारे में क्या विचार है। अगर आपके लाइफ में कोई मनी चैलेंजेस है, all of us want more money. Now first तो let us accept that. Yes, मुझे और चाहिए. Come on, all videos on वाले put up your thumb. Yes. I want बोलने में शर्माते हैं हम. नहीं, बहुत है, ये भगवान का दिया हुआ बहुत है, बहुत, we try to say that, but no, be open. First of all, अपने दिल को खोलो. Yes, I want more money. राइट। Yes. तो फर्स्ट सबसे पहले तो when we accept that, okay, अब मैं देखती हूँ कि मेरे नेगेटिव क्या विचार है, राइट? देन उनको आइडेंटिफाई करके, वो जो आप बोले ना रश्मि जी, नेगेटिव, दैट नेगेटिव सेंटेंस यू आर स्पीकिंग टू एक्सेप्ट इट एंड टू रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। उनको आप एनर्जी नहीं दे रहे। जी, राइट? हाँ, वी आर नॉट गिविंग एनर्जी देयर, इट इज जस्ट टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये नेगेटिव है, मैं इसको आज से जाने दे रही हूँ, so from tomorrow it is not there. Okay, thank you so much. There is one question on Facebook. What about those who fear spending for fear of lack created? And same question was asked by Suman ji here also. कि spend करने से खत्म हो जाएगा, what that fear. So we need to rinse. आप वो fear के साथ spend करोगे और you will end up, having a lack of money. You will end up having less of money to spend later on. क्योंकि हमने वही thought form, वही vibrations भेजी universe को कि बाद में future में हमारे पास पैसे नहीं है, right? Are we understanding that what thoughts we are sending the universe, what we are telling the universe, that if we spend today, but this doesn't mean that we are unmindfully doing our expenditures. We are unnecessarily spending. We are not trying to say that unmindfully खर्चे करो, वो नहीं करना है। लेकिन इस fear से भी खर्चे नहीं रोकना है कि अगर हम खर्चे करेंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। This fear also should not be there. I hope the question is answered. There is a question, ma'am, gifts refuse करना क्या हमेशा बुरी बात है? क्योंकि profession में gifts accept करना is not right. Sarita bhabi, you want to answer that?
And you should never see, if you want to say no to gifts, don't say nahi. Don't, don't, it is the manner. Suppose आपका profession ऐसा है, जो भी है, कि आपको gifts नहीं लेना है, but there has to be a way to say it. Okay, but don't, you say thank you so much, but some other time I will accept it at some, but don't say no. नहीं, मैं नहीं ले सकता, इतना costly gift तो मैं कैसे accept कर सकता हूँ, it won't be right on my part. Isn't that what we say? नहीं, इसकी जरूरत क्या थी? First is we push it away. इसकी जरूरत ही क्या थी? Abundance is coming to you, जैसे भी आ रही है, भगवान भेज रहे, यूनिवर्स आपको, जब आप लो उसको, आपको उनको कुछ वापस देना है, यू गिव इट. बट जब वो आ रही है आपके पास, प्लीज डू नॉट से नो. एंड आई एम वन, जो मैं 6 महीने पहले तक, साल भर पहले तक, anybody, even if my best friends brought something, I used to say नहीं, I can't, why do you all this, do you do this, I can't accept it, why don't you all listen to me. I used to really get wild कि प्लीज आप लोग गिफ्ट्स मत लाया करो. अब तो कोई मेरे को देता है ना, आई लिटरली, मतलब हाथ आगे बढ़ा के लेती हूँ. ठीक है, मेरे को कुछ देना होगा, आई विल पुट इट इन माई माइंड, आई विल रिटर्न द अबंडेंस. बट व्हेन अबंडेंस इज कमिंग टू यू, ट्राई, जब तक पॉसिबल है, डोंट से नो. अगर दीपक जी आपको रिफ्यूज करना ही पड़ता है, आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है, देन चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. थैंक यू, thank you so much, but I can accept it at some other time. Okay, but don't say a direct no to it. recordings मिल जाएंगी आज की session? हाँ, record, this is already there on Facebook. It's there on our Facebook page. Thank you so much. It was wonderful. Thank you so much. Children make undue demands. How to handle that? मैम ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा क्या? It is up. I think when we think about, when we talk about children ना, वो moderation क्या है हमारे को, as a parent we need to decide what is the right demand and what is an undue demand. Not every demand of a child can be met, we all know. But we have a very diplomatic way of saying no, rather than feeding into their heads that it is so expensive, या पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या, it is so difficult to earn money. Now, as a parent, we need to be conscious, we need to be aware that what we are feeding into our children, because this is what we were fed when we were growing up. So now that we know that what impact it has on our lives, what subconsciously it gets ingrained into us, we need to know a better way of giving what is required for them and saying no to what is not required for them. No in a not right away no, as Sarita Bhavi mentioned, because no, when we are saying for something, it is directly saying no for the money that is coming to us. I hope we have to actually, for each one of us, we have to find our own ways of handling the children. We need to know what demand is right and what demand is undue. And even your own mindset, na, wo bhi dekhiye. If you're calling it is, the demand is not right, is that your, aapka mindset? What is your mindset there? वो तो लैक माइंडसेट है ना, कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इन लोग इतना मांगते हैं. तो आपका खुद का माइंडसेट पहले चेक कीजिए. एंड चिल्ड्रन विल इम्बाइब व्हाट वी आर डूइंग. आप जो सोच रहे हो बच्चों में धीरे धीरे वही आएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन सी यू टॉकिंग नॉट कि पैसे पेड़ में लगते हैं क्या, but they have a very healthy attitude towards money, that you think, you be grateful. That be grateful. मैंने तुमको 5 रुपए भी दिए, तो be grateful for that. So once they learn that gratitude, then they will learn the value for money also. And somehow we can make them earn what they want. I mean, I have always tried this with my child, as to earn what they want in some form, maybe some petty job or whatever.
so that they understand, you know, what money is and to value it. And in a way, you know, that money is so important in life and we need to value it. That is what is important. मैम ये 7 times prayer करना है मैम. Do we have to do the prayer 7 times at stretch this also? You have to first personalize it as per your need. So then it won't be so long. ये बहुत लंबा आज हमने कराया because it was so general. So personalize it as per 7 times ना. Yeah, but 7 is of course the best. 7 Yeah. is the best. आप देखो आपके लिए कौन सा ज्यादा महत्व रखता है. For others, for yourself, for money, all three also maybe. But which is most important, you can do that. Okay, so we can do it for ourselves also ना. अभी जैसे ये 3 था, तो do we have to do all the 3 और या हम लोग we can do it for ourselves also ऐसा? It checks, हाँ, you can do only for yourself also, but you have to check in your life कि भाई दूसरे लोगों का भी कुछ किया हुआ मेरे mind में है. Is it somewhere in my psyche that person? Yeah, as wives we can feel my husband does not give me enough money. Or my father never gave me enough money when I was even, purane. When I was in school, my father did not give me money, or he did not give me money to go to America and study. Anything. It is all finally for money. Yeah. Correct. Recording मिल जाएगा मैडम हमको. Thank you so much, ma'am. Recording is there on our Facebook page, Weave the Magic. वो पेज फेसबुक ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा. You just so ma'am अभी according to your हाँ छाया जी आपका कंप्लीट कर देते. हाँ मैं फेसबुक पे नहीं हूँ मैडम, तो ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ऐसी. नहीं, it's recording is only on Facebook. Okay. What name? What वो क्या है? I put the name on the chat. मैं फिर से डाल देती हूँ. हाँ एक बार डाल दीजिए ना. आपको जो मैसेज मिला होगा उसमें भी नाम लिखा हुआ है हमारे ग्रुप का. उसमें लिंक भी है. मैजिक उसमें लिंक भी है. मैम, this is Sandhya. Yes, Sandhya ji, बोलिए. I want to ask one question. Ma'am, suppose I know the source of money from I am getting being an employee. Yes, suppose अभी कुछ प्रोसेस वगैरह होना है इंक्रीमेंट का, तो उस केस में मैं और मतलब जो मैनेजमेंट पर्सन है उनको इमेजिन करके विजुअलाइज करके फिर ये प्रेयर करूं कि मतलब कैसे कर सकते हैं? नहीं, यू वांट टू उनको फॉरगिवनेस करना है क्या कोई? आप है फेसबुक पे? हाँ मतलब Why do you मतलब want वो to... अभी सपोज we are waiting for that process of increment and it's not happening. So what I can do for that? तो are you angry with that person? कि अरे उसके कारण मेरा नहीं हो रहा है. Do you feel that? क्या है Weave the Magic Reason is that person only. Yes. Yes. हाँ, then of course first अपने gratitude तो करते ही हैं for that yes, person. Ma'am. Then yes, then you can do forgiveness for that person. For I forgive him for stopping my increment. Okay. Okay. Okay, ma'am. Thank you. There is this question, खुद पे मनी स्पेंड नहीं करते, क्या थॉट प्रिपेयर करना है? You answer. I think the affirmations what we can give here to ourselves is that I'm worth, I deserve all the money. Money loves me and I love money. I have all the money for all my needs. I have enough money for all my priorities and I am my priority. If I don't take care of my needs, nobody else would. So I am my priority. I will take care of all my needs. अलका जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी, good evening. So thank you so much first of all for spreading the word. Thank you so much. Thank you. You are awesome. I'm so impressed. I was just enjoying it. मैं 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन पे नहीं देखा था. Who was adding that point for children that to feel them that they have to earn the money? वो host ने बोला था कि participant ने बोला था? Participant का question था. हाँ. So what I felt was
हाँ, what I felt was कि अगर हम उनको ये बोलते हैं कि you have to earn the money, तो हम तो वही वाली beliefs कर रहे हैं ना, क्योंकि money comes easily, you have to do your bliss and money comes easily. अगर हम उनको ये बोल रहे हैं you have to earn your money, you have to do this, so something, तो ये तो वो वाला ही concept वापस से हम उनके subconscious भी, rather we have to just teach them simply gratitude. Gratitude is the key here. ना कि you have to do petty things to deserve that money or something. तो ये तो वो misbelief वाला concept आ रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा contradictory लगा. तो I was not like looking at the screen, so I wasn't sure कि was it that participant saying or the host saying, but that was just my point of opinion that came here to surface, that we अगर हम उनको ये बोलेंगे कि you have to do this job even if the person doesn't like that job and they have to do this to earn, तो वो तो contradictory हो गया ना to the thing, and they have to be grateful. I was the one who mentioned that अच्छा. we need to give children that value for the sense of money, is that, you know, we as a parent, we need to inculcate that habit also in them. Correct. We are their first teachers. The way we try to give them that value is how they pick it up. When I'm asking the parents to give petty things, doesn't mean petty things can be as simple as laying the dining table. Petty things can be as simple as brushing your own shoes. Petty things can be as simple as small things, that so that they get that sense of work, that sense of value, and sense of, you know, gratitude for small things. This is how we start learning. We need to teach our children, put into the habit. We have to, it's a very, very thin difference, thin line between negative beliefs and positive beliefs. Correct. See, beliefs can be affirmative, beliefs can be negative. Correct. So it's a very thin line. It is how we put in front of them. If we are ourselves positive about money, our emotions, our vibrations will be positive, what reaches them. I think the connection between the parent and the child is such that without speaking as well, we give them so many values, because they imbibe looking at us. They are like sponge, they absorb more than they totally imbibe as to what their parents are what doing. the parent are feeling rather than what we speak. They will absorb what we feel more than what we speak to them. That is the bottom line. Correct. And how we tackle money issues, what we think about money, is what gets transferred to them as well. See, at the end of the day, when we are saying that there is abundance in nature, it is, but we need to value it as well. Correct. And when we say that, you know, do not think before spending, we are not endorsing that you can overspend or you should, just keep on mindlessly spend. Yes. So even like for me, like a challenge area has been spending beyond the earnings. Like, so it's been a challenge area. So again, I look at it. So what is inside is outside. So when I look at it that way also, I see it that that's the area, like you say, whatever is challenging, there may be 10 qualities in the other person, but whichever area you find it challenging, that is the area wahan pe aapki bhi atkan hai. But this is so clear from mirror work and various things. So, for example, I was just like all the prayer, my atkan was seeing others spend beyond what I think they should. So then again, I was looking at myself. So that was the same area that I resonated. So I have a lot of work on forgiveness area in that area to practice and to put into action. And thank you so much for a beautiful prayer and beautiful forgiveness sadhana. Really grateful to both of you and everybody, all the resources for making this possible. Thank you so much. Thank you so much, Alkaji, for your support. Alkaji, just now you have answered your question yourself. Correct. Yes. You have just answered it. The world is our mirror. Yes. I could just see it so crystal clear.
as within, so outside. As within, so outside. It was so crystal clear to me. Like as I was doing the prayer, like what was my area of atkan, and I just saw it, and it was like, that's what, like they say na ki wo mirror, there was an exercise now, what areas do you find challenging in others? They may have 10 things, but aapko jo area bother karta hai na, wo area aapke andar bhi hai. So And easy that it is is. the test for you from the universe. That is the Yes. way universe wants you to grow. That is the way universe wants to learn, make you learn that lesson. This is pranic Yes. healing has taught us, the challenges what we face in our lives as just tests. And if we are not learning our lessons in the smaller test, universe gives us bigger ones. The pile starts increasing. Yes. Yes. Good. Thank you so much. Life is a mirror is so getting so That is crystal getting clear clearer each every day. day. It's Every all day. about you. It's all It's about all- मेरा तो आजकल सबको यही बोलती हूँ. It's all about you. आपकी Don't awareness में पूरा ब्रह्मांड है. Like it's like now I understand the meaning of this, that आपके अंदर कैसे पूरा ब्रह्मांड है, because everything what you are feeling is what is manifesting outside. Right. So easy to So see. true. So true. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So next week we come with forgiveness for health. Okay. This time we've created wealth, and next time we are going to create our health. Fantastic. It will be the same time, Dee? Yeah, timing will be same 9 p.m. next Thursday. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. To each one of you for being there. I mean, looking at Thank you, everybody, ma'am. seeing the enthusiasm gives us all the more motivation Thank you, to thank you, prepare, ma'am. to be, Both of on you are our very toes. amazing. So much, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. I have been missing all the sessions since quite a while. आज मजा आ गया. Thank you, Shalini ji. Thank you, Sarita. Thank you. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night, ma'am.